produced in Pakistan, whether it is produced by domestic firms or whether it is produced by multinationals, whatever is produced in Pakistan, both by domestic and multinationals, is will be included in Pakistan's GDP. That is national output. Okay. Now, this GDP or national output is basically measured at the current price level, at the current market prices. उसकी जो value होती है, वो determine की जाती है at the current market prices. That is, whatever prices are prevailing in the market, that prices are basically included in GDP. इससे हमें ये नजर आ रहा है कि चेयर, ये जो 10 चेयर्स का आउटपुट था हमारा, दिस आउटपुट वाज द नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट? सो हम यूनिट्स की बेसिस पे जीडीपी मेजर नहीं कर रहे होते, बल्कि हम जीडीपी मेजर कर रहे होते हैं वैल्यू की बेसिस पे, कि इन 10 चेयर्स की वैल्यू कितनी थी। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था, बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि कल को मिसाल के तौर पे अगर कल को यही चेयर्स जो हैं वो 300 की हो जाएंगी, तो जीडीपी की फिगर 3000 आ जाएगी। तो इससे हमें ये अंदाजा होता है कि भाई जीडीपी की जो फिगर है वो मिसलीडिंग भी होती है, बिकॉज इट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन इट, एंड दैट इज वाई व्हाट वी डू इज कि हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी क्या करता है? रियल जीडीपी बेसिकली आपकी जो नॉमिनल जीडीपी होती है, सही है ना, ये जो नॉमिनल जीडीपी होती है, द जीडीपी दैट इज मेजर्ड, the GDP that is measured at market prices, इसमें से जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है उसको डिडक्ट कर देता है। इट सब्ट्रैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन इट, एंड जब हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल देते हैं, when we deduct the effect of inflation, when we deduct the effect of inflation from GDP, so you know, when we deduct the effect of inflation from GDP, we derive the real increase in output or actual increase in output, the real increase in output or actual increase in output, ठीक है, without the actual increase in output without the effect of rise in price level or without the effect of inflation in it, यानी इन्फ्लेशन के इफेक्ट को माइनस करने के बाद। तो फॉर एग्जांपल, इसकी एक मिसाल ये भी ले लें कि फॉर एग्जांपल इफ जीडीपी इज राइजिंग बाय लेट्स सपोज 10%, राइट? ठीक है, इफ जीडीपी is rising by let's suppose 10%, and at the same time your inflation, that is your महंगाई, is also rising by let's suppose 6%, तो जीडीपी बढ़ रही है 10% से और आपकी महंगाई साइमल्टेनियसली वो भी बढ़ रही है 6% से। तो मुझे बताएं रियल जीडीपी कितने से बढ़ रही होगी आपकी? रियल जीडीपी इज राइजिंग बाय हाउ मच गाइस? कितने से बढ़ रही होगी? रियल जीडीपी इज राइजिंग बाय हाउ मच? एनीवन? Real GDP is 4%. rising by how much? 4%. Yes, definitely. 10% minus 6%, that is 4%, right? तो आपने कहा कि आपकी जीडीपी सर बढ़ रही है 10% से, लेकिन 10% जो जीडीपी में इंक्रीज है उसमें से 6% तो प्राइस लेवल का इफेक्ट शामिल है। तो फिर रियल इंक्रीज इन जीडीपी जो है वो कितना हुआ? रियल इंक्रीज इन जीडीपी हमारा हुआ सिर्फ और सिर्फ 4%। अब ये 4% जो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, 4% जो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, this is basically this is due to increase in actual output, ठीक है ना? That is, it represents a 4% rise in goods and services being produced. अब जाहिर सी बात है, अगर 4% गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो डेफिनेटली जब आपने गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस किए होंगे तो उस वजह से क्या होगा? डेफिनेटली इसके क्या क्या फायदे हुए होंगे? जब आपने गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस किए होंगे तो उसके क्या क्या फायदे होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ गई होंगी, बिकॉज ऑब्वियसली अ राइज इन जीडीपी मींस दैट मोर जॉब्स विल बी क्रिएटेड, ठीक है? एंड क्योंकि जब आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी होगी
एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा? एनीवन? निव्यान, व्हाट इज गोना हैपन अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो? व्हाट इज गोना हैपन अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी? हमने कहा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से आपकी इनकम्स बढ़ेंगी, ठीक है? दैट इज योर नेशनल इनकम्स बढ़ेंगी, आपकी इकोनॉमी की नेशनल इनकम बढ़ेगी, ठीक है ना? इसके बाद आपकी जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगी। व्हाट इज जीडीपी पर कैपिटा? जीडीपी पर कैपिटा स्टैंड्स फॉर इनकम पर हेड, ठीक है ना? इनकम पर पर्सन, आपकी इनकम। और जीडीपी पर कैपिटा पे हम बाद में करेंगे डिटेल में बात, लिख लो अभी। इट स्टैंड्स फॉर इनकम पर पर्सन, कि ऑन एन एवरेज एक साल में बंदा कितने कमा रहा है, ये होता है जीडीपी पर कैपिटा, लेकिन उसको समझाऊंगा बाद में। फिर गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज बढ़ेंगे। एनी अदर पॉइंट? निव्यान कोई और पॉइंट बताओ। टैक्स रेवेन्यूज बढ़ेंगे और क्या होगा? यस निव्यान। अमन? अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, हाँ ये हमने यहाँ कवर किया ना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इट मींस द सेम थिंग। टैक्स रेवेन्यूज बढ़ेंगे। लिविंग स्टैंडर्ड, Living standards, very good. Iraj, living standards are going to rise. But now remember, now there is, when you remember one thing, that whenever you write up, अब ये जो पॉइंट जैसे इरज ने बताया ना लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, ये पॉइंट तुमने स्टेट किया, सो यू वुड हैव टू एक्सप्लेन इन द एग्जाम कि व्हाट डू यू मीन बाय राइज इन, व्हाई वुड लिविंग स्टैंडर्ड्स राइज? लिविंग स्टैंडर्ड्स विल राइज बिकॉज people will buy those goods, right? People will buy goods and services, because जब लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं, तो लोग उस इनकम से क्या करते हैं? लोग उस, एक मिनट, लोग उस इनकम से क्या करते हैं? लोग उस इनकम से कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स करते हैं। जब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो लोग अपने वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, राइट? जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से आपकी लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ते हैं। और आप कह रहे हैं कि ये 4% जो जीडीपी बढ़ेगी, जरूरी तो नहीं है ना कि 4% में से सारा का सारा डोमेस्टिकली कंज्यूम हो जाए। सो हो सकता है कि 4% जो इंक्रीज हो रहा है, मे बी a small part of it might be exported as well. A small part of increase in output will be exported or might be exported. तो अगर वो एक्सपोर्ट होगा तो उससे क्या होगा? उससे आपकी फॉरेन करेंसी आएगी, इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, आपके फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, ठीक है ना? फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा आपको। और जब आपको पता है कि जब आपकी गवर्नमेंट के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में इजाफा होता है, तो गवर्नमेंट इस फॉरेन करेंसी से क्या करती है? इट रीपेज इट्स डेट्स, रीपेज इट्स डेट्स। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से कोई लोन लिया हुआ है तो उसको हम रीपे करते हैं। सही है जी? जी कोई सवाल था किसी का? किसी का क्वेश्चन था? नहीं सर। ठीक है, समझ आ रहा है मुस्कान? जी सर। ठीक है सर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज लिख सकते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं देंगे तो फिर उनका एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, गुड। एक और पॉइंट हमारे पास सामने ये आया है कि जब मुल्क में एम्प्लॉयमेंट लेवल, लेकिन इसको तरीक फिल्जा इसको लिखना, जब देखो पॉइंट बिल्कुल सही है, बट इट ऑल बॉइल्स डाउन टू हाउ यू राइट इट इन द एग्जाम. So for example, if you say that employment is rising, so you The can transfer payments will increase. Transfer payments will decrease होंगी, Decrease. हाँ, exactly. But again, you can't just make a statement. First, you have to make a connection and then make that statement. So you will say that, you will write it this way: since unemployment is falling, देखो इस तरह लिखेंगे, government's expenditures on transfer payments, including unemployment benefits, will fall too. But guys, what is the real benefit of a decrease in unemployment benefits? से फायदा क्या होगा? गवर्नमेंट को फायदा क्या होगा? अगर उनका अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पे खर्चा कम होगा तो फायदा क्या होगा? ये नहीं, ये भी तो बताना पड़ेगा ना. हाउ इज दिस एक्चुअली अ बेनिफिट? हो जाएगी. वेरी गुड स्टेटमेंट, दैट इससे होगा ये कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज गोना फॉल. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट is falling. Why? Because now government can maybe, invest this money into other projects, into more socially desirable projects. ये लिख लोगे तो और मजा आ जाएगा. क्यों? क्योंकि government can maybe, invest in education, healthcare, maybe on technology, things that will improve the productive capacity and potential of the economy, right? So it will make the economy more capable, because government will have more funds remaining now, because a lot of amount was being spent on trying to reduce poverty and giving these unemployed people some kind of benefits. But now that money would be saved and it would be spent elsewhere on other projects that might
improve social desirability and welfare and in the society and make people more better off and improve the living standards. तो ये बात हो गई, सही है ना? तो हमने डिस्कस कर लिया कि सर जीडीपी क्या है, हमने डिस्कस कर लिया रियल जीडीपी क्या है. So basically, we have discussed macro objectives, we have discussed GDP, we have discussed real GDP. We have basically looked at all the factors that affect मतलब वो चेन हम क्रिएट कर चुके हैं कि अगर स्पेंडिंग बढ़ती है तो उसका एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, उसका बीओपी पे क्या होता है. तो हमने चेन ऑफ एनालिसिस क्रिएट कर लिया कि ये पॉसिबिलिटीज होती हैं मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम्स के अंदर.